प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रहा है? ठीक है। शायुज, शायुज कैन यू हियर मी? शायुज शाह। कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, डार्क रॉय ऑफिशियल, हुज दैट? कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम? डार्क रॉय ऑफिशियल, हुज दैट? ओके। वर्षा, हाउ आर यू? 10/3, থ্রি তো নিচে আছে, কিন্তু তারা 120 স্কোয়ার প্লাস 45 স্কোয়ারের স্কোয়ার রুট করলে কি 10 আসে? না, 10 মানে 10/3 বললি তো? 10/3 মানে তো 10 এর স্কোয়ার 100, না না। না, রং অ্যান্সার। অ্যাভারেজ ভেলোসিটি 10 না, ভুল। হ্যাঁ, একটা বাজে ফ্র্যাকশন আসবে। ফ্র্যাকশনটা হবে কিছুটা এরকম। আহ, আচ্ছা, ও শুনতে পাচ্ছে না মনে হয়, দ্যার ইজ সাম ইস্যু উইথ দ্য ইন্টারনেট। এনিওয়ে, স্কোয়ার রুট অফ 120 স্কোয়ার প্লাস 45 স্কোয়ার/3, এরকম কিছু একটা আসবে। আমি পুরোটা ক্যালকুলেট করি না, আমি কিছুটা কিছুটা করে রেখে দিয়েছি। কৃষ্ণনন্দন হুয়া क्या? स्पीड या वेलोसिटी? अच्छा, मैंने स्पीड कैलकुलेट नहीं किया, देखते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस। अच्छा, সপ্রভ আছে, বিকজ আই ওয়াজ ট্রাইং টু হ্যাভ ইন্টারাকশন উইথ হিম। সপ্রভ আছে, বাট সপ্রভ, ক্যান ইউ হিয়ার মি, or at least let me know in chat, because I need to know that whether you are, I know you are here, you are following, but I just need to make sure. হ্যাঁ রাজস্বী বল। হ্যাঁ হ্যাঁ, yes sir, I'm there। আচ্ছা ঠিক আছে, সপ্রভ, yes, it's okay, it may be having some internet issue, my network is quite poor। Okay, ঠিক আছে, no issue। আচ্ছা, so you all of you have tried, now let's discuss। নৈতিক, কিছু বলবি? स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं आएगा, देखते हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा इसमें कृष्ण। সৌমিল, আর কিছু বক্তব্য? ঠিক আছে। ওকে, নাইস। Okay, let's discuss। So what do we have to calculate? First we have to understand the projectile, sorry, the projectile means, first we have to understand the equation of trajectory and how to proceed. First, get a relation between x and t, because this is a two-dimensional thing we are discussing. I cap and j cap is only there. First, get a relation between x and t, then get a relation between y and t. Once you have a relation between x and t and y and t, get rid of the t, find the relation between y and x, that gives you the equation of trajectory। Let's do it। Before Roy, अच्छा हाँ। So your Vx is what? 40। Your Vy is what? 30 minus 10। Nice। What do you mean by Vx? dx by dt। तो x कितना? 40t। What is this? dy by dt 30 minus 10t। तो y कितना आ रहा है? 30t minus 10t² by 2। तो ये कितना होता है ये? 30t minus 5t², that is your y। हु इज दैट? हाँ हाँ हाँ, चंद्रवली बोल। অ্যাভারেজ ভেলোসিটি, দাঁড়া, একটু হোল্ড কর, আমি ক্যালকুলেট করছি, উইল হ্যাভ আ চেক, বিকজ আমিও ক্যালকুলেট করিনি। তো নিউমেরিক্যাল অ্যান্সারটা বলতে আমি এই মুহূর্তে পারছি না, একটু দাঁড়া। হ্যাঁ অনির্বাণ, কিছু বলবি? বল না। ও না বললি, আচ্ছা। So your x is equals to 40t and your y is equals to 30t minus 5t square, 30t minus 5t square। Acha, now what is the, so I got a relation between y and t, and I also got a relation between x and t। Now substitute t from here, x by 40 কোথায় করব? এইখানে। করলে কি আসবে?
30 into x by 40 minus 5 into x by 40 का square. Clearly this kind of thing you have already solved. What does that, what kind of relation is this? This is represents 3 by 4 x minus 5x square by 40 square. Given the fact that we already have completed everything syllabus, so we know that this is nothing but equation of a projectile, or this nothing but equation of a parabola. क्योंकि हमको we know as far as mathematics is concerned that y square is equal to 4x is the relation for parabola. उसका एक और वर्जन होता है जो जिसको हम लिखते हैं ax square plus bx plus c equals to 0. That also represents a parabola. So here this equation y is equal to 3 by 4x minus 5, हाँ जो भी है 5x square by 400. Let me just simplify it a bit more. x স্কোয়ার বাই 40 ইন্টু 45, তাহলে 5 8 40, তাহলে 3x বাই 4 এক্স স্কোয়ার 4 8 32, তাহলে তাই তো হলো না, 5 40 ইন্টু 40, তাহলে 8 দিয়ে কাটলাম, তাহলে তাহলে 40 ইন্টু 8 হলে 1 বাই 4 8 32 320, হ্যাঁ 1 বাই 320, ঠিক আছে। তাহলে y ইজ ইকুয়াল টু 3x by 4, y is equal to 3x by 4 minus x square by 320. This is nothing but a equation of a parabola. And ये देखने में कैसा होगा, सबको पता है कि दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला, क्योंकि ये वही इक्वेशन है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वही रिलेशन है, सेम थिंग है। So let me do why I'm solving this, because I'm slowly taking you to motion in 2 dimension, that is we are entering into parabolic projectile motion. With that we will be entering into projectile motion, because I can't go parts by parts with every minute details. So I'm just taking you through these problems. So we started from class 9, we have developed the differentiation, we have solved some problem which has cleared our understanding of average speed and average velocity. From there we have started discussing of equation of trajectory, and there we are now solving 2 dimensional problem. So far we have done problem where it was representing a straight line, circle. Now we have come to a projectile. We have not discussed yet projectile, but what we have understood that this is the equation of trajectory here is nothing but y is equal to 3x by 4 minus x square by 320. That is the equation of a parabola, which we know with our knowledge that is basically representing a projectile motion. So if it is representing a projectile motion, how will that look like? ये आपका y रहा, ये आपका x रहा, ये आपका, this is a projectile motion, that is what we all know. अच्छा, if it is a projectile motion, ये what is this? Tan theta, correct, this is tan theta. A tan theta मतलब, now let me to utilize the knowledge we already have वो of projectile motion. ये आपका u है and this is theta. Tan theta मतलब इधर यू एक्स इधर यू वाई, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। ये आपका कितना है 3/4, और एक्चुअली था कितना ये 30/40, तो इसको 30/40 करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ का जो आपका वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड, नहीं नहीं सॉरी, यू tan theta is equal to কত 3/4, tan theta is equal to 3/4 which you have simplified, let's say 30/40. then tan theta is equals to perpendicular by base uy by ux which is 30/40 is this। आपका जो uy है वो है 30, आपका जो ux है वो है 40। दिस इज व्हाट नाउ वी हैव कम टू प्रॉपर डिस्कशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये हमारा हो गया आपका ट्रेजेक्टरी। तो अगर ये 40 है और ये 30 है, तो we all know what is the angle, the perpendicular, so this is basically representing like this is 4, this is 3, तो ये कितना होगा सबको पता है, ये 37 है। so you have projected a particle with a velocity u भी हम निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, ये कितना 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 50 मीटर पर सेकंड से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल 37 इन द हॉरिजॉन्टल। this will look like this. I'm not going into all the details of projectile. Now let's enter into projectile. Now that we have entered into projectile, now my next question was
কোথায় গেল, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. हाउ डू यू कैलकुलेट एवरेज वेलो, अच्छा कब बोला है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. और को घोष, at t is equal to 3 second you have to calculate average velocity and average speed. ठीक है, at t is equal to 3 second you have to calculate average velocity and average speed. Average speed একটু দাঁড়া, just hold on, আমি just calculate করছি. So, so far we have learned कि because this is my x tan theta, so this is my tan theta, and tan theta is equals to my 3 by 4 or 30 by 40, whatever. And that tan theta is nothing but perpendicular by base. So uy is 30, ux is 40, ux is 40, uy is 30. Now let's proceed. Acha, at t is equal to 3 second, where will be my particle? Let's just fast find it out. Now we all know that horizontal motion doesn't have any acceleration, it will remain as it is. ताले horizontal velocity at t is equal to 3, आपका u x कितना होगा, वही रहेगा, कितना होगा वो आपका जो भी है 40, तो 40 रहेगा, because there is no acceleration on that direction. But your u y will be how much, v equals to u minus gt. So 30, अरे दूर, 30 minus 10 into 3, wow, 30 minus 10 into t, so is it becoming 0? It is somehow becoming 0. So at t is equal to 3 second ही बोला है ना, हाँ, at t is equal to 3 second, yes, at t is equal to 3 second, what is happening, your y will be 0 and your x will be 40. मतलब कहाँ पे गया है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है, because it is only when you are at highest point your y velocity will be 0, however you will be having horizontal velocity. Now let's go step by step. What will be your x, how do you find out x, x का रिलेशन क्या था, 40t, तो t is equal to 3 में कितना होगा, 120 मीटर, y x डायरेक्शन, y कितना था, y था हम लोगों का 3 by not this 30t minus 5t इसका, लेट्स कैलकुलेट इट हियर, 3 is equal to 3, y कितना होगा, 30 into 3 minus 5 into 9, 90 minus 45, 45 meter, your y is 45 meter, your y is 45 meter. तो और हमको ये भी पता चला कि इसका y जो है वो u y will be 0. Now let me just cross check it. How to cross check, y आपका 45 मीटर है, let's check whether it is h max or not. How do you find out h max, uh, you find out h max is equal to v square is equal to u square minus 2g h max. u आपका जो भी है ये तो 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, और ये कितना है, u स्क्वायर जो भी है u y स्क्वायर माइनस 2g h max. तो आपका जो h max होगा वो u y स्क्वायर, u y आपका कितना था इनिशियली, 30, यस 30, 30 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, 30 इंटू 30 बाई 2 इंटू 10, तो ये हो गया आपका 3 और ये आपका 15, 3 15 45, यस एग्जैक्ट. तो यू आर एट योर हाईएस्ट पॉइंट. अच्छा, इफ यू आर एट योर हाईएस्ट पॉइंट द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज 120 45. लेट्स ड्रॉ इट. ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है. This is your origin. Now at t is equal to 3, you have come to this point. Distance and displacement. You have to understand. This is your displacement. कैसे कनेक्ट किया इसको आपने, डायरेक्ट. तो इसका x कितना था, 120, इसका y कितना है, 45. इससे आपको क्या मिला, ये मतलब इसका अगर पाइथागोरस करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 120 प्लस 45 तो क्या मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं. डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 120 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, योर एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल
total displacement by total time. Total displacement is what? Total displacement, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ 120 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर बाई टाइम, टाइम कितना 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 120 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर बाई 3 इज योर एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी, अच्छा हो गया। नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज द एवरेज स्पीड। For that, what you have to do? You have to calculate total distance by total time. What is total distance? This one. But calculating the arc here is tiresome. What will you do? You will do what do you know by distance? Distance का मतलब है आपको velocity is equal to dx by dt, ठीक है। लेकिन अगर इसका ही मैं मॉड लूं तो ये आपका डिस्टेंस हो गया अभी, ये अब नाउ द एक्स रिप्रेजेंट डिस्टेंस। अच्छा अब मैं अगर इसको ऐसा करूं, मॉड ऑफ v का dt के साथ ये इंटीग्रेट कर दूं, दिस विल गिव मी डिस्टेंस because I'm integrating the magnitude of the velocity, that will give me distance. But if I do it with vector, that is displacement, वो हमने already calculate कर चुके हैं। This is the highest point which was corresponding because my uy becomes 0. At uy becomes 0, we have calculated. This is 0, so uy square minus 2gh, uy was my, this is actually u square sine square theta, but anyway, that is 30 square by 2 into 10. So 30 into 30 is 900 by 2 into 10, 45. So 45 meter में that was 0, and we have found out to be square root of 120 square plus 45 square by 3. This is my average velocity. Now we are coming to discuss about average speed, and for that what will you do? This is the thing which you have to discuss. An average, yeah, anybody saying anything? Okay, average speed is what? Total distance by time. 3. Total distance is what? Integration mod of vdt by 3. Integration mod of vdt is what? Square root of vx square vy square dt by 3. Or what do you mean by square root of vx square and vy square? हमको t इज इक्वल टू 3 में बोला है ना, t इज इक्वल टू 3 में आपका vx कितना है, वी एक्स 40 है और वी वाई कितना है 0। तो ये आपका एक्चुअली हो जाएगा वी एक्स मीन 40 का स्क्वायर और वी वाई मीन 0 इसका ही। अगर आपको मैं ये बोल दूं कि मुझे इक्वेशन दीजिए, टी इज इक्वल टू 3 पे नहीं निकालना है, कहीं भी एक रैंडम पॉइंट पे निकालना है, तो आप कैसे करोगे? आपका आपको यू नो दैट थ्रू आउट दिस प्रोजेक्टाइल मोशन योर यू एक्स विल ऑलवेज बी 40 because there is no acceleration. Your uy will be changing and your uy was initially 30 minus 10 into t, ऐसे ये चेंज करता जाएगा। तो इसको अगर आप जनरलाइज करोगे तो यू विल बी राइटिंग इट एज 0 to 3 square root of 40 square plus 30 minus 10t का whole square dt divided by whatever time you are asking. That is the average distance. So you can calculate it and find out accordingly. Uh, yes. So have you understood it, Shomil? Okay. Rajashri? Okay, Noitik? अच्छा ठीक है चलो। So we have already, हाँ ठीक है, I understand, I can understand that internet may be a bit fluctuating, which is okay. Acha, so I'm moving ahead, or if anybody wants to copy or something, let me know, huh? Because I'm going a bit fast. So in case any you need to me to stop or something or repeat something, let me know. Otherwise, I'll pause it. Okay, I have 3 minutes. अच्छा, but नहीं होगा, ठीक है, चलिए, it's okay. अच्छा, so we have already discussed and entered into the projectile motion.